हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। दिस इज़ मॉडर्न हिस्ट्री लेक्चर सीरीज़ और इसमें हमने 5 पार्ट्स कर लिए। दिस इज 6th पार्ट, आई थिंक। यस, 5 पार्ट्स कर लिए हमने आगे। तो जिन्होंने वो 5 पार्ट्स मिस किए हैं तो वो हमारी यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, प्लेलिस्ट बना के रखा है, उसमें आप देख सकते हैं। सो क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। What is the reason behind the shifting of the capital of British India Empire from Calcutta to Delhi? कलकत्ता से दिल्ली क्यों की गई? रीज़न क्या था? शिफ्ट कैपिटल ऑफ दिल्ली, सॉरी कैपिटल ऑफ इंडिया। Option A, the climate of Delhi was more suitable for Europeans. Option B, Delhi was located at the center of empire. Option C, Delhi was a traditional seat of the imperial powers. Calcutta was a hotbed of revolutionaries. And choose the right answer. क्यों किया गया कलकत्ता से दिल्ली ये जो कैपिटल है उसको शिफ्ट? एंड यस, ऑप्शन डी, कलकत्ता जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल किया गया। उसके बाद जब पार्टीशन ऑफ बंगाल को ख़त्म किया गया उसके बाद कलकत्ता से दिल्ली की गई शिफ्ट दिस कैपिटल। कलकत्ता वाज अ हॉटबेड ऑफ रेवोल्यूशनरीज इज द रीजन बिहाइंड शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिलीव्ड दैट रूलिंग इंडिया फ्रॉम दिल्ली was easier and more convenient than from Calcutta. 4 million British pounds was the cost of shifting the entire administration from Calcutta to Delhi. ठीक है, शाबाश। Moving to another question. Who raised the slogan इनकलाब जिंदाबाद? चंद्रशेखर आजाद, मोहनदास करमचंद गांधी, लोकमान्य तिलक, हसरत मोहानी। And yes, the right answer is option D. Famous slogan इनकलाब जिंदाबाद was given by Maulana Hasrat Mohani. After bombing the Central Assembly in Delhi, the slogan was shouted by Bhagat Singh. It was one of the rally cries of the Indian independence movement. तो मौलाना हसरत मोहानी ने ये इनकलाब जिंदाबाद वाला स्लोगन रेज किया था। ओके, इन विच ईयर द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वाज फॉर्मड? कल हमने ऑल इंडिया किसान सभा देखा था, वो 1936 में बना था। तो आज क्वेश्चन है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कब बना, किस साल में बना? 1 फरवरी 1917, 31 दिसंबर 1920, 28 अगस्त 1921, 14 नवंबर 1922। एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन B. All India Trade Union Congress was formed in 31st December 1920. The All India Trade Union Congress is the oldest trade union federation in India. It is associated with the Communist Party of India. Got it? So option B is the right answer, 31st December 1920. Moving to another question. जलियांवाला बाग मैसेकर occurred on, जलियांवाला बाग मैसेकर कब हुआ था? January 31st 1917, August 12 1918, April 13 1919, December 25 1922. And yes, the right answer is option C. Jallianwala Bagh massacre, Jallianwala also spelled Jallianwala, also called massacre of Amritsar, incident happened on April 13 1919, in which British troops fired on a large crowd of unarmed Indians in an open space known as Jallianwala Bagh in Amritsar in the Punjab region. ठीक है, जो आजकल पंजाब स्टेट है इंडिया की, वहां पे हुआ था 13 अप्रैल को 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर। Okay, who commented that Cripps mission was a post-dated check on a crashing bank? Sardar Vallabhbhai Patel, Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Jawaharlal Nehru. And the right option is option B. Mahatma Gandhi commented that Cripps mission was a post-dated check on a crashing bank. Got it? Who founded the Banaras Hindu University? Who founded the Banaras Hindu University? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Madan Mohan Malviya, none of the above. And yes, option C is the right answer. Madan Mohan Malviya founded the Banaras Hindu University. Banaras Hindu University, formerly Central Hindu College, is a collegiate central and research university located in Varanasi, Uttar Pradesh, India. ठीक है? Who conceived the idea of Pakistan? Asif Ali, Muhammad Ali Jinnah, H.S. Shurawardi, Chaudhry Rahmat Ali. And the right answer is option D. Chaudhry Rahmat Ali, who conceived the idea of Pakistan. Okay. A series of articles by Aurobindo Ghosh known as Doctrine of Passive Resistance are associated with which of the following movements? Swadeshi and Boycott Movement, Non-Cooperation Movement, Young Bengal Movement, Civil Disobedience Movement. And yes, the right answer is option A. In April 1907, these articles had shown inefficiency of the ideals propagated by moderates during the Swadeshi movement. कि जो moderates का prayer and petition वाला method था उसको
क्रिटिसाइज किया गया और बोला गया इससे कुछ नहीं होने वाला है, तो अरबिंदो घोष क्या था, ये वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट था विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक एंड लाला लाजपत राय के साथ। Okay. Who was the president of Lahore session of Indian National Congress at which the resolution of complete independence was passed? S.N. Banerjee मतलब सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, दादाभाई नेहरू जी, जवाहरलाल नेहरू, बद्रुद्दीन तैयब जी। लाहौर सेशन का कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन में प्रेसिडेंट कौन था? एंड यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, क्योंकि पहले से ही सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू का यही मानना था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। द 1929 लाहौर सेशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू होल्ड स्पेशल सिग्निफिकेंस एज इन दिस सेशन पूर्ण स्वराज complete independence was declared as the goal of Indian National Congress. 26 January 1930 was declared as Purna Swaraj Divas. The Home Rule League movement in India was started by Surendranath Banerjee and W.C. Banerjee, Mahatma Gandhi and Motilal Nehru, Annie Besant and Gokhale, Annie Besant and Tilak. एंड यस, द राइट आंसर इज होम रूल लीग जो मूवमेंट है ये बेसिकली एरिश होम रूल मूवमेंट के सेम पैटर्न पे बनाई थी। एनी बेसेंट ने पहले आइडिया दिया था और फिर तिलक और एनी बेसेंट ने स्टार्ट की। पहले तिलक ने स्टार्ट की अप्रैल में, फिर सितंबर में एनी बेसेंट ने स्टार्ट की। ज़्यादा ब्रांच एनी बेसेंट के थे लेकिन ज़्यादातर लोग जुड़े थे फिर तिलक की वजह से। तो होम रूल लीग मूवमेंट इन इंडिया वॉज स्टार्टेड बाई एनी बेसेंट एंड तिलक। द इंडियन होम रूल मूवमेंट वॉज अ मूवमेंट इन ब्रिटिश इंडिया on the lines of Irish Home Rule movement and other home rule movements. Got it? Okay. Who of the following was the first president of Indian Trade Union Congress in 1920? पहला प्रेसिडेंट इंडियन ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो 1920 में बना था उसका पहला प्रेसिडेंट कौन बना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, Lala Lajpat Rai, Chittaranjan Das, Bipin Chandra Pal. And yes, the right answer is option B. The Indian Trade Union Congress was founded on 31st October 1920. Lala Lajpat Rai was the first president of the Indian Trade Union Congress in 1920. Got it? Okay. Who among the following were popularly known as red shirts? ये मैंने आपको कल भी बोला था। पीपल लेड बाय रानी गेंदिन ल्यूई जो नागालैंड की थी, मेंबर्स ऑफ आज़ाद हिंद फौज, खुदाई खिदमतगार्स, कांग्रेस सोशलिस्ट्स। रेड शर्ट्स हम बोलते थे खुदाई खिदमतगार्स को। खुदाई खिदमतगार वाज अ प्रिडोमिनेटली पश्तू नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस मूवमेंट नोन फॉर इट्स एक्टिविज्म अगेंस्ट द ब्रिटिश राज इन कॉलोनियल इंडिया। इट वाज बेस्ड इन द कंट्रीज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बेसिकली इनको खान अब्दुल गफार खान ने, जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, उन्होंने ये सेटअप किया था। The interim government formed by Indian National Congress in 2nd September 1946 was headed by C. Rajagopalalacharya, Mahatma Gandhi, Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru. And yes, the right answer is option D. The interim government of India was formed on September 2, 1946 from the newly elected Constituent Assembly. It was composed of 12 members, including 3 Muslims nominated by the Congress. Jawaharlal Nehru was the Vice President of the Council and he held the powers of the Prime Minister. ठीक है? So option D, Jawaharlal Nehru is the right answer. Who among the following annulled the partition of Bengal? partition of Bengal को खत्म किसने किया? लॉर्ड हर्डिंग, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड चैमल्सफोर्ड। लॉर्ड कर्जन की वजह से के टाइम पे हुआ था और खत्म किसने किया? ऑप्शन ए, लॉर्ड हर्डिंग। The partition of Bengal was annulled in 1911 by Lord Harding. It was done in response to the Swadeshi movement riots in protest against the policy. Got it? The radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of the main leaders founded the Independence for India League in opposition to the Montego reforms, the Montagford reforms, the Home Rule movement, Gandhi-Irwin Pact, the Nehru report. The radical wing of the Congress party with Jawaharlal Nehru as one of the main leaders founded the Independence for Indian League in opposition to, किसके opposition में बनाई थी? Option D. When the Nehru report came before the annual session of the Congress in Calcutta in December 1928, the left lashed it out on the fact that it did not want complete independence, ठीक है, and wanted only a dominion status. Meanwhile, in April 1928, the Independence for India League was formed with Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose as secretaries and S. Srinivasa Iyengar as president. क्योंकि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस बहुत नाराज हो गए थे जब नेहरू रिपोर्ट में इन्हें डोमिनियन स्टेटस रखा था। उनका मानना था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इसीलिए 1929 जो लाहौर सेशन हुआ था उसका प्रेसिडेंट फिर बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू को और उसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस जैसे कि पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी।
To promote the cause of Indian independence, Home Rule Society, an informal nationalist organization popularly called India House, was established in London between 1905 to and 1910 by, मैंने आपको ये कल भी बताया था कि इंडिया हाउस किसने बनाया था? लाला हरदयाल, श्याम जी कृष्णा वर्मा, वीडी सरवरकल, मदन लाल धिंगरा। एंड इसने श्याम जी कृष्णा वर्मा ने इंडिया हाउस बनाया था और इसने द इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी एक जर्नल स्टार्ट किया था। Shyamji Krishna Verma founded the Indian Home Rule Society in London. He came to Britain in 1879 as a Sanskrit scholar. Indian Home Rule Society in London was established in 1905. He also established India House in Highgate in London in 1905. With how many volunteers did Gandhi led his famous Dandi March on 12 March 1930 from his base Sabarmati Ashram? कितने volunteers के साथ? 20, 50, 78, 103. And yes, the right answer is option C. On 12 March 1930, Gandhi and 78 satyagrahis, among whom were men belonging to almost every region, caste, creed and religion of India, set out on foot for the coastal village of Dandi, Gujarat, 385 kilometers from their starting point at Sabarmati Ashram. तो 78 volunteers थे. Who among the following opposed Mahatma Gandhi's association with the Khilafat movement? Muhammad Ali Jinnah, Abul Kalam Azad, Fazl Haq, Khan Abdul Ghaffar Khan. And the right answer is option A. Muhammad Ali Jinnah opposed Mahatma Gandhi's association with Khilafat movement. So here option A is the right answer. Moving forward. Who was a British Prime Minister at the time of second round table conference? Neville Chamberlain, Ramsay MacDonald, Clement Attlee, none of the above. And the right answer is option B. Ramsay MacDonald was the British Prime Minister at the time of second round table conference. They were conducted as per the recommendations of Muhammad Ali Jinnah to Viceroy Lord Irwin and Prime Minister Ramsay MacDonald and by the report submitted by the Salmon Commission in May 1930. और रामसे मैकडोनाल्ड अवार्ड भी कम्युनल अवार्ड आया था फिर, है ना, जिसको अपोज किया था गांधी जी ने. Who was the viceroy during the time Mr. Attlee of England declared the British intention to transfer power to Indians? Lord Wavell, Lord Irwin, Lord Linlithgow, Lord Mountbatten. उस टाइम पे कौन वाइसराय थे जब क्लेमेंट एटली ने बोला था कि हमारा इंटेंशन अब है कि हम ट्रांसफर करेंगे पावर टू इंडियंस? एंड यस, द राइट आंसर इज लॉर्ड, इसने उल्टा किया है यहाँ पे. सो यहाँ पे वाइसराय उस टाइम पे था लॉर्ड वेवल, लॉर्ड लेलिंथ को नहीं था, लॉर्ड वेवल था, क्योंकि लॉर्ड वेवल था वाइसराय इंडिया का 1944 से लेके 47 तक, और 45 में इसने शिमला कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, है ना, हमने पढ़ा है इसके बारे में. सो लॉर्ड वेवल था उस टाइम पे वाइसराय जब क्लेमेंट एटली ने बोला कि हमारा इंटेंशन है आप ट्रांसफर ऑफ पावर करेंगे हम इंडिया की ओर. ठीक है, शाबाश. The first civil disobedience movement started before Dandi March, Gandhi-Irwin Pact, failure of the Cripps Mission, the adoption of a resolution declaring Purna Swaraj as the objective of the Congress. बताइए. And yes, the right answer is first civil disobedience movement started यहाँ पे पूछता है कि किससे पहली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट तो हम बोलते हैं चंपारण सत्याग्रह, लेकिन यहाँ पे इन मूवमेंट्स में सबसे किससे पहले सिविल डिसोबीडियंस स्टार्ट किया गया था. तो यहाँ पे आप देख लीजिए, क्रिप्स मिशन तो 1942 में आया, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस तो 1930 में था, और पूर्ण स्वराज रेवोल्यूशन 1929 में हुआ. बेसिकली गांधी इरविन पैक्ट 1931 में जो हुआ था ना, उससे पहले सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, और इन्होंने इनकार किया था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में टेक पार्ट लेने के लिए. सो ऑप्शन बी, द फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्टेड बिफोर गांधी इरविन पैक्ट. गांधी इरविन पैक्ट वाज अ पॉलिटिकल एग्रीमेंट साइंड बाय महात्मा गांधी एंड लॉर्ड इरविन, वाइसरॉय ऑफ इंडिया, ऑन 5 मार्च 1931 बिफोर द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन. ठीक है. The Indian National Congress represented the views of the microscopic minority in India. The contention was maintained by, ये किसने बोला था कि the Indian National Congress represent the views of the microscopic minority in India? Lord Curzon, Lord Elegant II, Lord Lansdowne, the Lord Dufferin. And yes, the right answer is option D. Lord Dufferin ने बोला था. The Indian National Congress was founded in 1885 under the tenure of the Lord Dufferin. Lord Dufferin came as Viceroy of India in 1884 after Lord Ripon. These lines are saying by Lord Dufferin. She represents a minority of the public whose numbers are small.
Mahatma Gandhi was referred to as the father of nation by Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Subhash Chandra Bose, C. Rajagopalacharya. किसने बोला था इसको father of nation? And yes, the right answer is option C. Mahatma Gandhi was referred to father of nation by Subhash Chandra Bose. Netaji Subhash Chandra Bose, while addressing the nation before launching an attack on British India with the Indian National Army in 1945, called Gandhiji father of nation. Got it? नो डाउट ये एक दूसरे के ऑपोजिट मेथड्स यूज़ करते थे, लेकिन रेस्पेक्ट बहुत करते थे आपस में. द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्मड इन December 30, 1906 एट ढाका में फॉर्म हुई थी. नवाब समीउल्लाह. अच्छा, ढाका, लखनऊ, लाहौर एंड अलीगढ़. सो ऑप्शन ए, द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वॉज फॉर्मड इन ऑन 30 December 1906 एट ढाका. ठीक है. Who among the following had founded the Theosophical Society in the United States of America? Madam Kamas, लाला हरदयाल, मैडम बालावत्सकाय एंड ओलकॉल्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती. लाला हरदयाल ने बनाई थी गदर पार्टी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज बनाया था. मैडम बालावत्सकाय एंड ओलकॉल्ट इज द राइट आंसर. सो मैडम H.P. बालावत्सकाय एंड रशियन वुमन एंड colonial H.S. Olcott and American founded the Theosophical Society in New York in 1875. They advocated the revival and strengthening of ancient religions of Hinduism. Got it? Okay, Mahatma Gandhi entered into freedom struggle in India in the year 1911, 1915, 1917, 1919. And yes, the right answer is option B. ये महात्मा गांधी इंडिया आए 1915 में, तो इसने यहाँ पे ये लिखा है, लेकिन उसने स्टार्ट फिर किया 2 साल तो ये फिर घूमे, इंडिया का टूर किया, और 1917 में फिर इन्हें चंपारण सत्याग्रह स्टार्ट किया था. At the stroke of midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom, was said by Lord Mountbatten, Dr. Rajendra Prasad, P.J. Jawaharlal Nehru, none of the above. किसने ये बोला था? And yes, the right answer is option C. At the stroke of midnight, when the world sleeps, India will awake to life and freedom, was said by Jawaharlal Nehru. He was an Indian anti-colonial nationalist, secularist, social democrat and author who served for 16 years as India's first prime minister following India's independence in 1947. Got it? With which one of the following did the civil disobedience movement in India commence? किससे start हुआ था civil disobedience movement? Dandi March, Mahatma Gandhi is going on fast, no tax campaign by Sardar Patel, the unfurling of the national flag by Nehru. And yes, the right answer is option A. The Salt March, also known as the Salt Satyagraha, Dandi March, and the Dandi Satyagraha was an act of non-violent civil disobedience in colonial India led by Mahatma Gandhi. Of the following, whose ideas had influenced Mahatma Gandhi's thought? Lenin, Tolstoy, Hitler, Karl Marx. And yes, the right answer is option B. Raychand by his living contact, Tolstoy by his book The Kingdom of God is Within You, and Ruskin by his Unto This Lost. Besides these three personalities, Gopal Krishna Gokhale and Gita and the Bible were lifelong sources of inspiration for Gandhi. The viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards the Indians was Lord Hardinge, Lord Warren Hastings, Lord Curzon, Lord Chelmsford. And yes, the right answer is option A. The viceroy upon whom a bomb was thrown but he did not change his attitude towards Indians was Lord Hardinge. So, इतने सारे थे इस PDF में, and this is the end of today's session. Like the video, share it with your friends, subscribe to our channel, and yes, write it in the comment section कि आपको कैसा लग रहा है. I wish you all the best. Take very good care of yourself.